Okay, so good morning to you all. Uh, Still waiting for a few students to come back. This is a very important class, and since it's a very important class, I would want full attention of yours. Okay, I'll be giving you sufficient breaks in between. Okay, but I don't want any kind of खुशी लास्ट में मत बैठो आगे आओ. I don't want any kind of casualness. जिसको नहीं मन है वो जा सकता है. जो भी सुनना चाहता है पाम के बारे, वो बहुत इंपॉर्टेंट एनाटमी है, बहुत डिफिकल्ट है. आप खड़े हो जाओ प्लीज. आप ऑलरेडी नहीं सुन रहे हो तो बाद में क्या सुनोगे. प्लीज स्टैंड अप. यू एंड यू ऑल्सो. बाहर जाओ. मैं बुलाऊंगा 15 मिनट बाद. अगर बात करना है, जब टीचर बोल रहा है बात सिर्फ मैं करूंगा. प्लीज लीव द रूम. जाओ. तुम बैठो, ये यही बात कर रहा था. जाओ तुम निकलो. प्लीज गो आउट. प्लीज गो आउट. आई एम very I again repeat my appeal to you people. जिससे नहीं सुनना जानना है वो जा सकता है, बट अगर मेरे क्लास में एक शब्द भी अगर बात करोगे या क्या हंसी मजाक करोगे तो मैं बहुत नाराज हूँगा. ओके, इज इट क्लियर? Because palm is not easy to teach, palm is not easy to learn, palm is not easy to remember, and I'll try my best to help you out with how to simplify things. This was not, please close the door. This was not originally a class, आज होता नहीं है, but since there is an exam going on, तो जब किसी कार का टायर पंचर होता है क्या करते हो तुम लोग? स्टेपनी लगाते हो ना. तो मुझे स्टेपनी की तरह ही यूज किया गया कि आप बच्चों को थोड़ा सा, एंड आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज आई वांटेड सम टाइम टू टीच पाम. तो मैं एक स्टेपनी ही हूँ फिलहाल, बट स्टेपनी का भी रोल होता है, इसलिए प्लीज थोड़ा सा रिस्पेक्ट दो स्टेपनी को भी. I generally, I don't use PPT. Mine is a blackboard teaching, so I'll be using the interactive class, the board over there, but also the PPT because Palm has a lot of diagram which can't be drawn in the given time. So I have used the PPT. So whenever I rarely use the PPT, there is generally some message. So the first message is very clear. If you want to succeed, there are many aspects to it, okay? You don't get success so easily. At the root of the success, there are so many failures, so many rejections, so many criticisms, so many sacrifices, and yes, discipline and consistency, which is very, very required. Okay, so another thing. Second one is again a message because a very sad thing happening in all over the world. There is a war going on. So we just pray and hope that the war ends because there's so many children being killed every day. And you read the news, you open the channel, and it's really sad to see. So this was a nice quotation. Why do we only rest in peace? Why don't we live in peace too? Okay, so let's pray for those who are dying, for their soul, and let's pray that the war ends very soon. And my third slide is the most important slide for all of you today. For the whole 2 hours that I'm here, and tomorrow also I'll be teaching the palm and the spaces of, and this is palm of hand. Fourth slide is most important for you. This is the topic of today. Okay. So stay calm while I teach palm. बुद्ध की तरह बिल्कुल एकदम ध्यान से सुनो. नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं ये इस तरह पढ़ा रहा हूं जैसे तुम लोगों को कुछ नहीं आ रहा है, बेसिक से बिल्कुल, है ना. I'll be needing the flexors of the forearm. आप लोगों ने पढ़ लिया है, हमने बोला था, ठीक है. So like all parts, we have the skin, nothing new to it. Then the superficial fascia. After that, deep fascia. Here the deep fascia has 3 parts, really going into the detail of it. Okay, deep fascia has 3 modifications. The flexor retinaculum,
The palmar aponeurosis and the fibrous flexor sheath. Don't have to be worried about it right now. We'll talk about it. So deep fascia is important. Skin and superficial fascia, nothing much to it. After that, we have, yes, the arteries. We have the arteries, nerves. So we have over here in the hand also. But there are muscles. And any guesses how many muscles are there in the hand? 20 muscles. So you can imagine how difficult. इतनी सी जगह में जब 20 muscles हो तो कितना मुश्किल है. सबका origin, insertion, nerve supply, action, clinical, applied, whatever, है ना. प्लस उसी में nerves भी है, arteries भी है, उसके branches भी हैं. Deep fascia का modification भी है. And just the palm, not the back. Back is called the dorsum of the hand. I'm not talking about the dorsum. I'm just talking about the palm. Okay. So, but it's very interesting if you understand. Okay. Interesting. Let's just go with each part of it. Spaces of hand. Spaces of hand is very, very clinically important part of the hand and the forearm. Spaces of forearm and hand. ये मैं कल पढ़ाऊंगा तुम लोग को. Okay. So starting with the skin. Skin is, as you can see, skin is thick, immobile. हम लोग का palm का skin कैसा है? Thick है, immobile है. Can you move it? No, it's thick. है ना? Then we have, let me also open my board over here. Okay, so if we are talking about the skin, it is thick, immobile, what else? There is a gland with a SG, there is another gland with a SG. Can anyone guess? Sweat gland and sebaceous gland. That commonly you come across these in the skin. Okay. So hand has a lot of one and zero of the other. Yes, we have a sweaty hand. Okay. So lot of sweat gland and there is no sebaceous gland in the skin. Skin may there is. So sweat gland plus sebaceous gland nil. So we have a thick immobile skin with a lot of sweat gland and no sebaceous gland over here. Is it clear? What do you see in your hand? हाथ में देखो. तुम लोग ज्योतिष हो कोई? Anyone who has interest in astrology? No one has interest in astrology. You have. My wife has suddenly developed interest and she reads a lot in the last 4-5 months. अब वो मेरा हाथ देख करके बहुत भयानक चीजें सब बताती हैं. बहुत अच्छी चीजें भी, बट मुझे सिर्फ भयानक वालों से ये लगता है. तो हाँ, लकीरें हैं हाथ की. ओके. Okay, so these are called palmar creases. Okay, the palmar creases. Okay, and we have ridges also, which is there in the tip of the finger, जिसको हम लोग fingerprints कहते हैं in layman's term. Okay, so those are papillary ridges. What do we call? So we have palmar creases and we have papillary ridges. Palmar creases and
papillary ridges. Ridge is a elevated area. Okay, so ridge. Okay, so these ridges are most prominent in the tip of the fingers. Okay, and there are in three patterns. Okay, loop, whorl, WHORL, and third, composite. So I will not go into it. It's not very important for you all. Okay, it's for forensic science people to teach you, but they are like if they are in a loop form or they are in a whorl form, like we have the petals and all, or in the composite form. Okay, so those are called papillary ridges. So that's all about the skin. I'm repeating it once again. What do we have? Thick skin, which is immobile, having a lot of sweat gland and no sebaceous gland. Okay, and we have palmar creases. I'll talk about the creases tomorrow when I talk about the spaces. And we have papillary ridges. There is also a nerve supply to the skin, which is called cutaneous nerve supply. आप लोग को पढ़ाया गया है मीडियन नर्व, वल्नर नर्व, तो आप लोग को पढ़ाया गया होगा ये भी. मैं एक बहुत ब्रीफ आप लोग को नर्व सप्लाई बता देता हूँ. Okay, so if I divide it into, I'm not very good at drawing a hand, but it's not very bad either. So you can see three territories, A, B, and C. This is the palm of the hand. Okay, so A, as you can see, is towards the medial side, the ulnar side. Okay, so this is supplied by and I'm only talking about the skin, not the deep supply. So this part means the medial 1/3 of the palm. देखो जब हम hand की बात करेंगे ना, whenever we talk of hand, what do we have? Especially when we talk about the palm over here. Okay, so we can divide it basically into two parts. Okay, this is the palm proper you have, and these are the digits. इसे हम digit कहेंगे, digit. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Those are digits. Those are having phalanges. Okay, ठीक है. So the medial half of the palm. This is the medial half of the palm, इतनी दूर. And medial, how much of digit? 1.5. Means the little finger and the medial part of the ring finger, or medial part of the palm, is supplied by ulnar nerve. Remember that. This is supplied by which nerve? There are basically three nerves supplying: ulnar, median, and पीछे से radial nerve है. From behind we have the radial nerve. तो यहाँ front में ulnar और median के बीच में ही लड़ाई है कि कौन कौन सा part को supply करेगा. So medial 1.5 is supplied by the ulnar, and lateral 3.5 digits and lateral 2/3 of the palm is supplied by the median nerve. Okay, so nerve supply you can write. Nerve supply of palm. Lateral 2/3 of the palm A है. A is lateral 2/3 of palm. Okay, ब्रैकेट में लिखो palmar cutaneous branch of median nerve. कौन सप्लाई करता है? मीडियन नर्व तो कर ही रहा है. मीडियन नर्व का भी जो palm को सप्लाई कर रहा है उसको क्या कहते हैं? palmar cutaneous, क्योंकि स्किन को कर रहा है, nerve of median nerve. The palmar cutaneous branch of median nerve is supplying to the lateral 2/3 of palm. हमने कहा ना palm को हम palm proper और digit में करते हैं ना.
तो 2/3 मीडियन नर्व का है, बट 2/3 को भी हम दो पार्ट में डिस्क्राइब कर रहे हैं, द पाम एंड द डिजिट. ओके, so lateral 2/3 of the palm is supplied by the median nerve, but median nerve का कौन सा branch? Palmar cutaneous branch. Okay, palmar cutaneous branch of median nerve. Then lateral, how much of finger? 3.5. 5 है, 1.5 हटा तो कितना बचा? मैथ तो नहीं पढ़ाएंगे ना तुम्हें. कितना बचा? 3.5. So lateral 3.5 is supplied by which nerve? मीडियन नर्व. मीडियन नर्व का कौन सा ब्रांच? डिजिटल ब्रांच. ओके, कॉमन डिजिटल या डिजिटल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व. इज इट क्लियर? समझ में आया? तो नर्व सप्लाई देन अगेन 4 पार्ट में डिवाइड होगा ना. देन मीडियल 1/3 ऑफ द पाम. भैया तुम लोग को मैं समझा देता हूं ठीक से, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. लुक, this is supplied by one nerve and these are supplied by another nerve. Both are median. Okay, similarly this is supplied by one nerve and these are supplied by another nerve. Both are ulnar. समझ में आया? इसका नाम है palmar cutaneous branch of the ulnar nerve. इसका नाम है डिजिटल ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व. इसका नाम है palmar cutaneous branch of median nerve. इसका नाम है palmar cutaneous branch डिजिटल ब्रांच ऑफ median nerve. समझ में आया? जब डिजिट को करता है तो डिजिटल कहलाता है और जो ब्रांच पाम को करता है वो palmar कहलाता है. समझ में आया? इज इट क्लियर? So how many branch? There are two nerves supplying. Basically 2/3 को median कर रहा है, lateral 2/3 को, जिसको हम दो पार्ट में बोल रहे हैं. हाँ, the lateral 2/3 of the palm is supplied by the palmar cutaneous branch and lateral 3.5 finger by the digital branch, both of the median nerve. समझ में है? And medial 1/3 of the palm is supplied by the palmar cutaneous of ulnar and medial 1.5 finger by the palmar cutaneous branch of digital branch of ulnar. Is it clear? So I could have kept it for later, but I thought खत्म ही कर दे. Skin का हो गया पूरा. After skin, what do we have? We have the fascia. Okay, fascia has nothing but fat and one muscle which is lying in the superficial fascia, which is called palmaris brevis. So fascia has one muscle lying which is called the palmaris brevis. And deep to the superficial fascia, we have the deep fascia. Okay, so we have skin. Skin is thick, immobile, lot of sweat gland, no sebaceous gland, having papillary ridges and palmar creases. Nerve supply, there are two nerves supplying. Median nerve to the lateral 2/3 by palmar cutaneous branch and digital branch. Digital to the finger and palmar cutaneous to the palm. And ulnar nerve to the medial medial half. Okay, medial 1.5 digit by the digital branch of ulnar and medial part of the palm, medial 1/3 of the palm by the palmar cutaneous branch of the ulnar nerve. Is it clear? So that is about the skin. Superficial fascia has just fat in it and one muscle which is lying there, which is palmaris brevis. Palmaris, P-A-L-M, palmaris, A-R-I-S, palmaris brevis. What is the meaning of brevis? Short. And what is the meaning of longest? Long. So how many people are there with one name over here? एक नाम वाले कितने हैं? ए से कितने हैं? जिसका ए अल्फाबेट से, जिसका एक ही नाम है, खड़े हो जाओ. मतलब जो 2 अभिषेक या 3 अभिषेक या इस तरह से, जैसे I already know two Swatis over there, Shakti over there. So how many are there with 3 names? कौन क्या नाम है बताओ? 3 अमन है. कहाँ है?
आ जाओ तीनों, इधर आओ तीनों, आओ 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 आओ, जल्दी आओ, जल्दी, टाइम मत वेस्ट करो। फास्ट 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 फास्ट। यहाँ खड़े हो जाओ हाइट के हिसाब से। हाँ, तुम थोड़ी देर के, तुम लगभग सेम हाइट के हो। कोई एक छोटा सा बच्चा आ जाए। आओ आओ, ठीक है। तो अभी तुम वहीं रहो। तो इसका नाम अभी थोड़ी देर के लिए अमन है ना? तो अगर ये है तो दिस विल बी अमन लॉन्गेस्ट एंड दिस विल बी अमन ब्रेवेस्ट। ओके, जब तक दो है तब तक ठीक ठीक है, बट जब तीसरा आ जाता है तब क्या होता है? तब उसको कहते हैं डिजिटी मिनिमी, हाथ में। ब्रेविस से भी छोटा, मिनिमी। ठीक है, इधर आओ। बहुत क्यूट है ये बच्चा, लगभग बराबर है, कहाँ छोटा है। I'll be using these terms. There were two Pankaj in my batch, and I was tall, so I was called Pankaj longest, and other was called Pankaj brevis. तुम विश्वास नहीं करोगे, मुझे कोई अब पंकज बैच वाले नहीं कहते हैं, लॉन्गेस्ट ही कहते हैं। अबे लॉन्गेस्ट कहाँ है? तो लॉन्गेस्ट, बिकॉज पंकज बोलने पर दोनों उठ जाते थे, तो नाम पर गया लॉन्गेस्ट, उसके बाद लॉन्गेस्ट ही बोलते थे। अमन लॉन्गेस्ट, ठीक है, जाओ। तो एनीवे, व्हाट वाज आई टॉकिंग? there is a muscle called palmaris brevis. Brevis means chota, because there must be a palmaris longest. That's why we have studied the longest over here. So this is a short one. So there is a palmaris brevis. Okay, so you can conclude a few things out of it. If it's a brevis muscle, it will be a muscle which is origin and insertion are very close by. Okay, शुरू हुआ जब पास में ही खत्म हो गया, और अगर लॉन्गेस्ट है तो दूर से आ रहा है और दूर तक गया है। ठीक है, तो एक आइडिया भी लगाना है, सिर्फ नाम का ये नहीं है कि लॉन्ग ब्रेविस है, मेरे तो वेरी शॉर्ट मसल ओवर हियर, दिस palmaris brevis. Okay, so if you have the skin over here, and if you have the superficial fascia over here, and if you have the deep fascia over here, skin, superficial fascia, deep fascia. So superficial fascia is having fat, okay, and one muscle which is the palmaris brevis muscle, okay, and there are fibrous band which are connecting the skin to the deep fascia. There are fibrous band connecting the skin to the deep fascia and dividing the superficial fascia into compartments. ठीक है, अगर ऊपर स्किन से डीप फेशिया तक अगर जाएगा वर्टिकली तो कंपार्टमेंट में बच जाएगा ना। तो दीज आर हेल्प कॉल्ड वाटर कुशनिंग, ये बहुत ही कुशनिंग इफेक्ट देता है। देखते हो पाम कितना सॉफ्ट और कुशनिंग इफेक्ट है। ओके, सो दिस इज बिकॉज द सुपरफिशियल फेशिया इज हैविंग फैट व्हिच हैज बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉल कंपार्टमेंट्स बाय फाइब्रस सेप्टा दैट इज गोइंग फ्रॉम स्किन टू डीप फेशिया। इज इट क्लियर? नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट मैं बता दिया। सो नथिंग मोर अबाउट superficial. Now let's come to the main part, the deep fascia. So the main part would start here. It's forming a thickening in the wrist. It's just like a wrist band. जैसे wrist में band पकड़ते हैं ना, but it's just in the front. And what is this compartment called? Flexor. So what should this band be called? Flexor band. So we call it flexor retinaculum. Okay, this band which is lying over the carpal bone, lying over which? Over the carpal bone is called the flexor retinaculum. Okay, we have similar band at the back. अभी मैम बताई होंगी, extensor retinaculum. Okay,
So we have flexor. What is flexor retinaculum? It's nothing but the modification of deep fascia. एक डीप फेशिया एक शीट था, वो यहां पर मॉडिफाई हो करके थिक हो गया, एंड इट्स कॉल्ड द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम. But it's a very important part. I'll talk about it. There is another part of the deep fascia which is kind of triangular. Okay, and it's triangle in the palm and forming a triangular sheet. Generally a fibrous sheet. We use a word called aponeurosis. Have you come across this word? Aponeurosis is a fibrous sheet. So there is a fibrous sheet formed by the deep fascia. Again a deep fascia is modified. So what name should we give it? Palmar aponeurosis, because this is a palm and it's an aponeurosis. So no big deal to it. Okay. So the second modification is Palmar aponeurosis. First was flexor retinaculum and second is Palmar aponeurosis. These gives off slips which further divides into two slips, and finally they go up and they form a Now if you remember what were coming, कौन से muscles थे? अच्छा, let's come to the what were the muscles of the flexor compartment? Superficial muscle, कौन बताएगा? Pronator. You just put your hand like this and you get the answer. ऐसे रखते हैं हम लोग ना, we someone must have told you, you put it like this. So this is the thumb, the short one. This is pronator teres. They all start from the medial epicondyle of the humerus. Where do they start? Medial epicondyle of the humerus. Thumb तो यहीं पर end हो गया. So this is pronator teres. Rest supposing are going till here. From medial epicondyle. तो यहाँ से आ रहा है ऐसे. So one is going to the radial side, radial carpal bone. So it's called flexor carpi radialis. Okay. Then palmaris brevis, palmaris longus, sorry, then flexor digitorum superficialis, which is the main muscle, and then flexor carpi ulnaris. तो एक radialis है, flexor carpi radialis, एक ulnaris, है ना, एक pronator teres जो यहाँ खत्म हो गया, दो हैं जो आगे तक थे, palmaris longus and flexor digitorum superficialis. So this is actually the palmaris longus tendon, which has, some people say, is the degenerated part of the palmaris longus tendon. Flexor palmar aponeurosis, which I told you is a modification of deep fascia, is also believed to be a degenerated form. कभी palmaris brevis रहा होगा, with evolution it has now become a palmar aponeurosis. तो ये basically palmaris longus का continuation ही है, ये आगे जाकर के एक sheet बना दिया, ठीक है, palmar aponeurosis. Okay. So anyway, this is the second modification. The third modification is deep fascia. Now I'm rubbing this part off, so you can see this is the deep fascia. So what are the modifications? Flexor retinaculum, palmar aponeurosis, and all the tendons which are going of the were going actually they are going deep, so this should not be there. It's going deep to the flexor retinaculum. So what are these tendons going? Flexor digitorum superficialis. So दो tendons जा रहे हैं हर finger में.
फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, है ना। डीप में हम तो सुपरफिशियल मसल्स की बात की है, डीप मसल्स में क्या है? फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस एंड फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, है ना। ये 3 मसल्स हैं। तो ये सब जो मसल्स हैं ये कहाँ जा रहे हैं? फिंगर्स में जा रहे हैं। तो थंब में कौन सा गया? फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। और चारों फिंगर्स में मीडियल फोर फिंगर्स में कौन गया? फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, which I will call FDS. Is it okay? FDS कह सकते हैं। And flexor digitorum profundus, which I will call FDP. So that is FDP, okay? So all these FDS and FDP are going to the fingers. So the third modification is a fibrous sheath around these tendons. Okay, third modification of deep fascia जो है वो यहां पर तुम्हें दिख रहा है। इन टेंडन्स के अराउंड देयर इज, around these tendons you have a fibrous flexor sheath, ठीक है। इसके अराउंड एक शीथ बन रहा है, फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ around the tendons of FDS and FDP. Okay, so in the fingers the deep fascia is forming fibrous flexor sheath. So I repeat once again, what are the 3 modifications of deep fascia? In the wrist, in the carpal bone, flexor retinaculum. In the palm, palmar aponeurosis. And in the fingers, fibrous flexor sheath. Fibrous flexor sheath. Fibrous flexor sheath. So I'll try to show you a real diagram so that you can appreciate it better. See, now can you see what is this? Flexor retinaculum. What is this triangular structure? Palmar aponeurosis. And what are these? Fibrous flexor sheath covering the tendon of FDS and FDP. समझ में आया? तो ये 3 मॉडिफिकेशंस हैं किसके? डीप फेशिया के। एंड इन तीनों पर शॉर्ट नोट्स आता है, तो हम इन तीनों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? So I'm giving you a 2 minutes break and then I'll start about the flexor retinaculum. No going out. I'll talk about the, you can talk meanwhile. I'm giving you a 2-3 minutes break. Then we'll talk about the, first the flexor retinaculum. Then, yeah. पीछे जाके कहाँ छुप जाती हो? ये क्या खराब है ये बेंचेस? I will try to use some very simple diagram to explain my topics today, which even a class 3-4 class child can draw, those kind of diagrams. Okay, so how many carpal bones do we have? 8. Okay, what are those? From lateral to medial, scaphoid, lunate. Now I'm drawing just, yeah, please come back now to the class. Tum ho aao jaldi. I'm just drawing 4, the 4 pillars. तो अब बताओ ये क्या होगा? Scaphoid, trapezium, pisiform, hamate.
We have a, please listen carefully now, we have a flexor retinaculum running like this, like a band, which is a thickening of the deep fascia. Okay, and it is attached laterally to the scaphoid and trapezium and medially to the pisiform and hamate. ठीक है, तो 4 पिलर्स हैं एंड बहुत ही आप लोगों को बीच में अगर जाना है तो जा सकते हैं, ये इन लोगों के लिए ज्यादा है, आप लोग बीच में निकलना चाहे निकल सकते. So we have this flexor retinaculum running over here. Okay, it's a transversely running. So what are the attachment laterally? Lateral attachment क्या है बताओ? Scaphoid and trapezium. Laterally क्या है? Scaphoid and trapezium है. अब तुम्हें एक्स्ट्रा याद रखना होगा, tubercle of scaphoid, not just scaphoid, tubercle of scaphoid, okay, and crest of trapezium. Okay, so it is tubercle of scaphoid. So attachment लिखो, flexor retinaculum, flexor retinaculum लिखो जल्दी से. It's the modification of the deep fascia. It's the modification of the deep fascia to form a thickened band. It's a modification of the deep fascia to form the thickened band. Please close the book. No opening the book in my class. I have told you. मैं बाहर कर दूंगा और book खोलोगे तो. It's the modification of the deep fascia क्या बोला था आगे हमने? To form a thickened band over the carpal bone. Over the carpal bones. Lateral attachments लिखो, attachments, underline करो, attachments and underline. Laterally, जाओ उस लड़के को बुला के लाओ जिसको बाहर किए थे, अगर है तो, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं. Laterally attachment क्या है? Scaphoid और trapezium तो पता है, वो तो जरूर लिखना, बट लिखना पड़ेगा एग्जैक्ट, अगर लिखोगे तो ज्यादा नंबर मिले. ओके, tubercle of scaphoid and crest of trapezium. But in case you forget, you just write scaphoid and trapezium. Don't miss that at least. Is it clear? Tubercle of scaphoid and crest of trapezium. Okay. Medial attachment. तुम लोगों को पता है कौन सी दो चीजें हैं? Pisiform and hamate. So pisiform and hook of hamate. HH. Pisiform and hook of hamate. Now listen very carefully to what I am saying. Please close the door. If you look at the palm of the hand, starting from the carpal bone, near the carpal bone, okay. So the carpal bone is not straight. There is the proximal and distal rows of carpal. The proximal row has 4 bones, the distal has 4 bones, which we just mentioned. It's not lying plain or straight, it's concave. So there is a concavity like this. तो कार्पल बोन जिसके ऊपर ये बैंड बन रहा है उसमें एक कंकेविटी है, समझ में आ रहा है? एंड देयर इज अ बैंड विच इज गोइंग ओवर इट. So when there is a concavity and there is a band going, so what will be in between? A tunnel. Okay. So there is a tunnel which is formed, which is lying below the flexor retinaculum and above the carpal. So this is called the carpal tunnel. Okay. What is it forms? The carpal tunnel. Okay. So you can write down the carpal bone has a ventral concavity. आगे की तरफ ventrally, पीछे की बात नहीं करें, ventral concavity. Which is bridged by flexor retinaculum.
which is bridged by flexor retinaculum. The so-called tunnel that lies below the flexor retinaculum, I am saying it in my language, you can write in your language, समझ लो basically, है ना? The so-called tunnel which is lying below the flexor retinaculum is called the carpal tunnel. The so-called tunnel which is lying below the flexor retinaculum is called the carpal tunnel. Now it is interesting to note, please listen again, कि जितने भी चीजें जा रही हैं, all the flexor muscles, superficial flexor, deep flexor, ulnar nerve, median nerve, radial artery, brachial artery, they are all going to the hand. So they will go either below through the tunnel or above the tunnel, है ना? दो ही रास्ता है पाम में जाने का, या तो टनल के नीचे से जाएगा कार्पल टनल से, या ऊपर से जाएगा. So there are 5-6 things which are going above the tunnel and remaining are going deep to the tunnel. Is it clear? So we'll first talk about the structures which go above the tunnel, and next we'll talk about the structures which go deep to the tunnel. In fact, we'll draw a tunnel. You will have to draw a carpal tunnel. ये question आता है तो carpal tunnel बनाना पड़ता है, ठीक है? It's a very simple diagram, I'll tell you. Okay? I'm taking going very slowly. I could have just flipped through the PPT and finished it off. I'm going very slowly so that you have the concept of things. Okay, so what are the 6 things which are going above the tunnel? So okay, supposing this is the tunnel, okay, and yes, this is the scaphoid and this is the pisiform, so you know which is medial and which is lateral. Scaphoid है तो ये lateral होगा, ये medial होगा, okay. So there is a nerve which is going above the tunnel, okay, which is the ulnar nerve. So medial most क्या है? Ulnar nerve, ठीक है. उसके जस्ट लैटरली क्या तुमको मिलेगा? अल्नर आर्टरी, ओके, ठीक है. यहां पर एक मसल था, अभी हमने जिक्र किया था, ये कौन सा मसल है? Difficult to shade here, but which was forming the palmar aponeurosis later on. Palmaris longus, ठीक है, बाद में एपोन्यूरोसिस बना रहा था. Palmaris longus. There is one nerve which is median nerve. ये अल्नर था, ये मीडियन नर्व, ये टनल के ऊपर से नहीं जाएगा, ये अंदर से जाएगा, है ना. बट हम यहां तक बनाकर रोक दिया है मैंने इसे, ठीक है. हमने आप लोगों को बताया था नर्व सप्लाई ऑफ हैंड, तो हमने पाम का सप्लाई क्या बताया था? लैटरल 2/3 का. कौन सा ब्रांच? palmar cutaneous branch of median nerve, and इधर palmar cutaneous branch of ulnar nerve. ये दोनों palmar cutaneous, PC मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं, palmar cutaneous, PC ब्रांच जो दोनों हैं ये ऊपर से जाती हैं. तो एक ulnar nerve का था ना, तो ulnar nerve का palmar cutaneous branch
और ये मीडियन नर्व नहीं जाएगा, बट मीडियन नर्व का पामर क्यूटेनियस ब्रांच, ये दोनों ऊपर से जाएंगे। अल्नर नर्व और उसका पामर क्यूटेनियस दोनों ऊपर से जाएगा। मीडियन नर्व का पामर क्यूटेनियस ब्रांच ऊपर से जाएगा, बट खुद मीडियन नर्व नीचे से जाता है। समझ में आया? ओके। और लास्ट में एक आर्टरी का ब्रांच है, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, उनका नाम सप्रा है। मैं उनको याद करता हूं तो मुझे याद आ जाता है, डॉक्टर सप्रा। सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। So supposing radial artery is going like this, so there is a superficial branch of radial artery. So now we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 structures, which I want you all to remember now. I am repeating it. अल्नर नर्व और अल्नर आर्टरी दो जो हैं वो तो हैं, तो एक अल्नर का दोनों ही है जो ऊपर से जा रहा है। मेन जो मेन आर्टरी है अल्नर नर्व और अल्नर आर्टरी, एक मेन होता है, एक ब्रांच होता है। तो अल्नर नर्व इज द मेन नर्व, अल्नर मीडियन, तो अल्नर ऊपर से जा रहा है। इज इट क्लियर? अल्नर आर्टरी भी ऊपर से जा रहा है। इज इट क्लियर? फिर अल्नर नर्व का पामर क्यूटेनियस ब्रांच ऊपर से जा रहा है। इज इट क्लियर? फिर पाल्मेरिस ब्रेविस ऊपर से जा रहा है, सॉरी लॉन्गस, थैंक यू, पाल्मेरिस लॉन्गस ऊपर से जा रहा है। फिर पामर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व जा रहा है ऊपर से, और फिर सप्रा भाई सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ एसपी इज फॉर सुपरफिशियल, सुपरफिशियल रेडियल आर्टरीज, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ एसपी इज फॉर सुपरफिशियल। सो सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी है ना। और इसी ऑर्डर में बोलोगे तो हम ज्यादा खुश होंगे। ठीक है दिव्यांशी, ऑर्डर याद हुआ? सबसे मीडियली, मीडियल मोस्ट हो सकता है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव आ जाए, विच इज द मीडियल मोस्ट स्ट्रक्चर। हाँ, नर्व, अल्नर नर्व मीडियल मोस्ट है। हम ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, मतलब अवे है थोड़ा दूर, हम ऐसे याद रखते हैं। अल्नर नर्व, अल्नर आर्टरी, पामर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, पैल्मेरिस लॉन्गस, पामर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ median nerve, and superficial branch of radial artery. They are all going above the flexor retinaculum. फ्लेक्सर रेटिनाकुलम टॉपिक है ना, कार्पल टनल की बात नहीं कर रहे हैं। नीचे से जो जाएगा फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के, वो कार्पल टनल से जाएगा, है ना। अब हम नेक्स्ट वो बताएंगे। So you can see how simple diagram I have used. How I have used the most simple diagram to explain, to show it. You don't have to draw a complicated diagram. बुक में बहुत कॉम्प्लीट, तुम 2-4 गोले बना दो, एक फ्लेक्सर रेटिनाकुलम बना दो, लैटरल अटैचमेंट बस याद रखना, स्केफॉइड का ट्यूबरकल, ट्रेपीजियम का क्रेस्ट, हुक ऑफ हैमेट, और पिसिफॉर्म में कुछ भी नहीं बोलना है ना। ये अटैचमेंट हो गया, और ऊपर से क्या जा रहा है, 5 चीजें। अल्नर नर्व, ऑर्डर में बोलना तो अच्छा लगता है, अच्छे स्टूडेंट ऑर्डर में बोलते हैं। अल्नर नर्व, मीडियल टू लैटरल बोलना होगा, मीडियल टू लैटरल अल्नर नर्व, अल्नर आर्टरी, पामर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, पाल्मेरिस ब्रेविस, पामर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, एंड सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। इज इट क्लियर? याद कर लिया सबने? ओके, सो now what goes deep to it? After that I'll give a break. Okay, what goes deep to the flexor retinaculum? So again a very simple diagram.
Okay. Now this is the second row that I have drawn. The second row के कौन से कार्पल बोन है बताओ? Trapezium, trapezoid, capitate, hamate with a hook you can see over here, hook of hamate. And you can see there is a concavity. Okay. And I'm drawing a flexor retinaculum over here. इसके ऊपर जो 6 चीजें थी वो मैं नहीं बना रहा हूं, वो अलग से हमने दिखा दिया था. अब इसके नीचे से क्या चीजें जा रही हैं वो मैं बताऊंगा, है ना? Is it clear? So what will go deep to it? All the muscles of the front of the forearm. तो कौन कौन से मसल्स हैं बताओ आप लोग? जो जा रही थी, अब प्रोनेटर टेरिस तो यहाँ रुक गई थी, प्रोनेटर क्वाड्रेटस यहाँ पर था, तो ये नहीं जाएंगी, है ना? तो कौन जाएगा? फ्लेक्सर कार्पाई रेडियस भी नहीं जाएगा क्योंकि वो यहाँ एंड हो गया. फ्लेक्सर कार्पाई एक सेकेंड, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस एंड अल्नारिस यहाँ खत्म हो गया था, तो ये भी नहीं जाएगा. ठीक है. पल्मोनरिस लॉन्गस ऊपर से गया है तो वो भी नहीं जाएगा. तो बचता क्या है? FDS, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गर, है ना? तो इसे बना देते हैं. क्या दिक्कत क्या है? फोर टेंडेंस ऑफ FDP एंड कुछ बुक में 4 टेंडेंस ऊपर बना देते हैं, बट एक्चुअली जो होते हैं ना FDS के टेंडेंस थोड़े से इस तरह रहते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे. FDS के FDP के लाइन में रहते हैं, FDS वाले ऊपर नीचे रहते हैं. बट चलो, लेट्स नॉट गो इनटू दैट मच डिटेल. लेट्स ड्रॉ 4 ओवर हियर. ओके, इज इट क्लियर? और क्या जाता है? फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गर. Is it clear? Now these tendons are having a synovial sheath around them. Okay, ये टेंडन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट टेंडन है, FDS, FDP and FPL, flexor pollicis longus. So they have a synovial sheath around them. And this also has a synovial sheath around them. Okay, so they are not going just the tendon, surrounded by a synovial sheath. Okay, one very important nerve went above. Another very important nerve is median nerve, that is going deep, है ना? तो median nerve, जितनी भी चीजें जा रही हैं सबसे important है median nerve. So you can draw a median nerve. Median nerve. Is it clear? Now there are, it's not as simple. There are 2 extensions. Okay, ये जो please listen very carefully. ये जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है, इसका अटैचमेंट तुम्हें पता है, यहाँ पर स्केफॉइड एंड ट्रेपीजियम, यहाँ पर पिथिफॉर्म एंड हैमेट था, है ना? बट ये दोनों तरफ में एक स्लिप दे रहा है. ओके, एक दे रहा है सुपरफिशियल स्लिप और एक दे रहा है डीप स्लिप. ये डीप स्लिप है, ये सुपरफिशियल स्लिप है. इज इट क्लियर? Now through this area passes another tendon, flexor carpi radialis. ये टनल के कंटेंट में नहीं आता है, but flexor carpi radialis is passing through this.
So you have to draw a flexor carpi and no synovial sheet in this. Flexor carpi radialis. Okay? और ये जो यहाँ पर है, ये एक्चुअली क्या है? फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे है या ऊपर है? ऊपर है ना? तो ये कंटेंट में नहीं आएगा। तो इसमें से एक नर्व और एक आर्टरी जा रहा है। तुम लोग बताओ कौन सा नर्व आर्टरी? अभी हमने डिस्कस किया था। यस, you have the ulnar nerve and ulnar artery. So ulnar nerve and artery are so important that they have been given a separate tunnel. And how is this tunnel formed? By a slip of the flexor retinaculum. And this tunnel is called Guyon's tunnel. G-U-I. Guys होता है ना, guys. Hello guys. So Guyon's tunnel. Guyon's tunnel. G-U-Y-O-N. G-U-Y-O-N. Guyon's tunnel. So what structure passes through the Guyon's tunnel? Ulnar nerve, ulnar artery. Is it clear? Okay. तो जब बनाओगे पूरा टनल तो ये भी बनाओगे. And this slip is also called as, this slip is given a name. This is called volar carpal ligament. इसको हम लोग volar, इस slip को हम लोग क्या कहते हैं? Volar carpal ligament. तो चलो इसको अलग कलर से कर देते हैं. This is called volar carpal ligament, and this tunnel is called Guyon's tunnel. Is it clear? Volar carpal tunnel, volar carpal ligament and Guyon's tunnel. And structures which are going deep, what are those structures? Foretendon of FDS with a synovial sheet, foretendon of FDP, दोनों का common synovial sheet है. Then FD, then flexor pollicis longus with a synovial sheet. वो क्या है? Foretendon FDS, foretendon FDP. Then median nerve. Okay, these are the content of the carpal tunnel. And this sheet, ये जो sheet बन रहा है यहाँ पर, this synovial sheet is called radial bursa क्योंकि radial side में जा रहा है. And this sheet is called the ulnar bursa. ये याद रखना, ये जो sheet है synovial sheet, इसको क्या नाम दिया गया है? ulnar bursa and radial bursa. तो ये भी कंटेंट ही हो गया एक तरह से. टेंडेंस के साथ जो synovial sheet है, जो flexor pollicis longus वाला है, उसको हम लोग कहते हैं radial bursa और इसे कहते हैं ulnar bursa. Okay. So those are the structures of the flexor retinaculum, those above and below. Take a break of 10 minutes and then come back. फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस जा रहा है थंब में रेडियल साइड, ये रेडियल बर्सा हो गया और ये इधर अल्नर साइड कहला रहा है. मीडियल को अल्नर साइड कहते हैं, तो ये अल्नर बर्सा हो गया है.
दिस इज अ डीप फ्लिप, तो ये नीचे जा रहा है ना, डीप है फ्लेक्सर रेटिनल, और ये ऊपर से जा रहा है तो सुपरफिशियल से। नाम इसका नहीं दिया है, बस हाँ डीप फ्लिप कह सकते हो। सुपरफिशियल का नाम दिया हुआ है वोलर कार्पल लिगामेंट। तुम लोगों को दिख रहा है उधर बोर्ड में? Can you get some water for me? Thank you.
लेट्स गो अंदर। धूप चाहिए? एसी कम करवा दो, बंद करा दो। आप लोग क्यों झेला रहे हैं? जाइए, मेरा क्लास कर दीजिएगा। नहीं, अगर बोर हो रहे हो मैं चले जाइएगा। 1 घंटा जरूरी है, बाकी तो एक्स्ट्रा क्लास। क्या टाइम हो रहा है? ओके, please be silent. Coming to the second modification of the deep fascia, which is the palmar aponeurosis. बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कोई बात नहीं करेगा अब सिवाय मेरे। So this is triangular in shape. Don't start writing. रुक जाओ, रुक जाओ। समझ लो, ट्रायंगल अगर है तो ट्रायंगल का एपेक्स होता है, बेस होता है। लिख भी लेना। So the apex is towards the flexor retinaculum and apex continues with which muscle? Palmaris longus. Okay, the apex or the apex is proximal, base is distal. कह सकते हैं apex is proximal and it extends up to the distal part of flexor retinaculum. Flexor retinaculum का proximal है, ये distal है। ओके, तो एपेक्स का ये पाल्मर एपोन्यूरोसिस का ये प्रॉक्सिमल है, ये डिस्टल है। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम का ये प्रॉक्सिमल है, ये डिस्टल है। ये वर्ड यूज करना पड़ता है ना। तो द इट्स ट्रायंगुलर इन शेप, द एपेक्स इज प्रॉक्सिमल एंड इट एक्सटेंड्स अप टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। ओके, द बेस इज डिस्टल एंड इट्स extend up to the head of the metacarpal bone. Metacarpal bone जो होता है ना, उसका हेड यहां पर है। तुम ऐसे अगर पीछे से देखो, मुट्ठी बनाओ तो ये जो है, व्हाट डू वी कॉल दिस? नकल। जो एग्जाम में नकल करते हो वो नहीं, KNUCKLE, नकल। ये नकल इज द हेड ऑफ द मेटाकार्पल। तो यहां पीछे तो पता चल रहा है, आगे ये है हेड ऑफ द मेटाकार्पल, तो यहां तक एक्सटेंड करेगा। देखो ये वाला कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है इससे, है ना। तो द हेड ऑफ द मेटाकार्पल तक एक्सटेंड कर रहा है। बेस इज टुवर्ड्स द हेड ऑफ द मेटाकार्पल, अप टू द हेड ऑफ द मेटाकार्पल। इज इट क्लियर? तो एक 5 ट्रायंगुलर शीट बनाया है जिसका एपेक्स फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की तरफ है, बेस टुवर्ड्स द हेड ऑफ द metacarpal. Okay, base gives off 4 slips, 1 2 3 4, 4 स्लिप दे रहा है, 1 2 3 4। अब यहां बुक में क्या लिखता है मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। अभी बुक में लिखता है कि हर फिंगर के लिए एक एक स्लिप दिया। इज इट क्लियर? हर स्लिप सुपरफिशियल और डीप में डिवाइड हो गया। ठीक है, यहां हमने इस डायग्राम में नहीं बनाए हैं। हर स्लिप जो गया है वो 2 में डिवाइड कर रहा है, वो सुपरफिशियल डीप नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, हर स्लिप 2 में डिवाइड किया, सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल जो है वो डर्मिस में जाके मर्ज कर जाएगा, स्किन में। सुपरफिशियल स्लिप है ना, डर्मिस में मर्ज कर जाएगा। जो डीप स्लिप है वही मेन खेला उसी का है, डीप स्लिप का। डीप स्लिप विल गो एंड इट विल ब्लेंड विथ, यहां कौन सा ज्वाइंट है? मेटाकार्पोफेरेंजियल ज्वाइंट। ठीक है,
यहां पर एक लिगामेंट भी है, डीप ट्रांसवर्स लिगामेंट उसमें, और ये कौन सा फैलिंग्स है? प्रॉक्सिमल फैलिंग्स। तो बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फैलिंग्स में 1, मेटाकार्पोफेरिंजियल जॉइंट में 2, और डीप ट्रांसवर्स लिगामेंट, ट्रांसवर्स मेटाकार्पल, डीप ट्रांसवर्स मेटाकार्पल लिगामेंट में 3। तो मैं इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर रहा हूं। सपोजिंग दिस इज द बेस, so it's giving off 1, 2, 3, 4 slip, first slip, second slip, third slip, fourth slip। हर स्लिप जो है वो डिवाइड करता है सुपरफिशियल एंड डीप में, सुपरफिशियल एंड डीप में। सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, आई डोंट हैव मच टाइम नाउ। सुपरफिशियल एंड डीप में, सुपरफिशियल तो स्किन में जाके मर्ज कर गया, जो डीप है, हर का डीप वो 3 जगह जा करके मर्ज कर जाता है। एक तो डिस्टल फैलिंग्स, बेस ऑफ द डिस्टल फैलिंग्स, ये बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फैलिंग्स है ना, प्रॉक्सिमल फैलिंग्स, मिडिल फैलिंग्स, डिस्टल फैलिंग्स है, बेस ऑफ प्रॉक्सिमल फैलिंग्स, मेटाकार्पोफेरिंजियल जॉइंट, और एक ट्रांसवर्स लिगामेंट है, डीप ट्रांसवर्स में। तो इन तीनों में जाकर के डीप स्लिप मर्ज कर जाता है। तो बेस का क्या हुआ? बेस ने 4 स्लिप दिए चारों फिंगर्स के लिए, हर स्लिप 2 में डिवाइड किया, सुपरफिशियल एंड डीप। Superficial goes to the dermis and the deep merges with the base of the proximal phalanx, metacarpophalangeal joint, and अगर याद रहे तो deep transverse metacarpal ligament, एक ligament transversely रन कर रहा है उसमें। और deep, और ये जो है ना, यही जो है deep slip, डीप स्लिप ही जाकर के आगे फाइब्रस फ्लेक्सर शीट बना रहा है, जो नेक्स्ट टॉपिक है। इसी से निकल करके डीप स्लिप से यहां पर गया, ठीक है। तो डीप स्लिप मान लो मर्ज किया ये 3 में, और क्या बनाया? एक फाइब्रस फ्लेक्सर शीट बनाया, जो नेक्स्ट पर बताएंगे, है ना। तो एनीवे, लेट्स कम टू द पाल्मर एपोन्यूरोसिस। तो पाल्मर एपोन्यूरोसिस इज द थिकनिंग ऑफ द डीप फेशा in the central part of the palm. Okay, it is triangular in shape. Apex is lying proximally towards the flexor retinaculum. Base is lying distally towards the head of the metacarpal. ये head of the metacarpal की तरफ है base. Base gives off 4 slips for each finger. Each slip divided into superficial and deep slips. Superficial merges with the skin. कहानी खत्म. The deep slip, 1, 2, 3. There's 3 things. It merges with the base of the proximal phalanx, with the metacarpophalangeal joint too, and with the deep transverse ligament. It also continues forward as the fibrous flexor sheet of the digit. It also forms the fibrous flexor sheet of the digit. ठीक है? Is that clear? So that is about the palmar aponeurosis. Now, clinically, what happens? Sometimes, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तुम लोग को शॉर्ट नोट आ सकता है। This palmar aponeurosis can become inflamed. ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो गया। जब इन्फ्लेमेशन होता है तो ये थिकन हो जाता है। What happens? It thickens and there is a contracture. Contracture मतलब सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो अगर थिकन हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? ये पूरे फिंगर्स तक जा रहा था, तो ये फिंगर्स भी ऐसे हो जाएंगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये थिकन हो, ये इन्फ्लेम्ड हुआ, इन्फ्लेम्ड होने की वजह से ये थिकन्ड हो गया और कॉन्ट्रैक्चर हो गया। तो इट विल कॉन्ट्रैक्ट, so it will pull all the fibrous flexor sheet, so all the fingers will become like this. Okay? तो जनरली ये जो होता है तो ये मीडियल साइड में होता है, लैटरल साइड में नहीं होता है। क्यों, ये मैं नहीं उतना डिटेल में जाऊंगा। तो मीडियल हाफ में होता है। तो जनरली पेशेंट जब आएगा तो उसका मीडियल फिंगर ऐसे रहेगा,
इस तरह से, ये दोनों ठीक रहेंगे, ये ऐसे रहेगा, इस तरह का कंट्रैक्चर, और इसे कहते हैं डुपिट्रेंस कंट्रैक्चर। बहुत ही डिफिकल्ट स्पेलिंग है, मुझे तो याद ही नहीं होता था एज ए स्टूडेंट। DUPUYTREN Dupuytren's contracture, DUPUYTREN Dupuytren's contracture, I can't even pronounce it properly, ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या हो रहा है, देयर इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ द फाइब्रस फ्लेक्सर ऑफ द पामा एपोन्यूरोसिस ऑफ द मीडियल हाफ। इसमें सिर्फ मीडियल हाफ का होता है, लैटरल का नहीं होता है। ओके, इट्स नॉर्मली सीन इन द मीडियल हाफ। ओके, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन देयर इज thickening and there is contracture, and that leads to the flexion of the little and the ring finger. Okay, इसमें भी याद रखना जो डिस्टल जॉइंट है इंटरफेरेंजियल, वो फ्लेक्स नहीं होता है, प्रॉक्सिमल वाले फ्लेक्स होते हैं, डिस्टल वाला स्ट्रेट रहता है। ठीक है, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट इज स्पेयर्ड, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय इट। ठीक है, तो लैटरल पार्ट स्पेयर्ड है और मीडियल पार्ट में भी डिस्टल फैलिंग्स जो है वो स्पेयर, वो नहीं फ्लेक्स करता है। बाकी ये दो, तो इस तरह का हाथ लेकर कोई आएगा तो शक करना कि ये डुपिट्रेंस कंट्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, एंड ये किसका पैथोलॉजी है, किस चीज की गड़बड़ी में हो रहा है, पामा एपोन्यूरोसिस। दिस इज द पामा एपोन्यूरोसिस, इन्फ्लेमेशन, थिकनिंग एंड फ्रैक्चर ऑफ द पामा एपोन्यूरोसिस। समझ में आ रहा है आप लोगों को? So now another thing that is very important, but tomorrow's class it will be very important, but I'll tell you, these medial border and lateral border, they give a septa downward. ठीक है, ये मीडियल और लैटरल बॉर्डर जो है ना, ये अंदर की तरफ सेप्टा देता है। सुनो, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडियल और लैटरल बॉर्डर अंदर की तरफ जाता है, और जब ये अंदर सेप्टा देता है तो अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं। स्किन वाले कंपार्टमेंट तो इंपॉर्टेंट नहीं थे, ये जो कंपार्टमेंट बन रहे हैं ना, तो बहुत सारे स्पेसेस बन जा रहे हैं। वो स्पेसेस ऑफ हैंड जो है, जो कल का टॉपिक है, वो बिकॉज ऑफ दी सेप्टा गोइंग डाउन, एंड एक एरिया था वहां पर अगर बीच में दीवार आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे स्पेसेस बन जाएंगे। ठीक है, तो अभी इतना याद रखना कि देयर इज अ septa going downward from the palmar, from the medial lateral border. From the medial border to the, कहाँ जाएगा, to the fifth metacarpal, and from the lateral border to the first metacarpal, है ना? तो नीचे तक जाता है। कहाँ तक जाता है? From the medial border of palmar eponeurosis to the lateral वाला to the first metacarpal, and medial वाला to the fifth metacarpal. So that's all about the palmar eponeurosis. Now coming to the fibrous flexor sheath. Fibrous flexor sheath. ये फिंगर्स में जो टेंडन्स जा रहे हैं उसके अराउंड एक डीप फेशिया का थिकनिंग है अराउंड द टेंडन्स। अब कौन से टेंडन्स हैं, कौन बताएगा? चार, हर फिंगर में कौन, एक फिंगर की बात करो, क्या है, किसका टेंडन है? एफडीएस एंड एफडीपी। एक टेंडन एफडीएस और एक एफडीपी का है ना। तो अगर मैं इस तरह से इस फिंगर का सेक्शन काटे यहां से, ठीक है, और डायग्राम बनाए इस तरह से, सपोजिंग दिस इज अ phalanx, ओके, and you have a fibrous flexor sheath, and inside you have the tendons of FDS और उसके डीप में FDP, okay, and these are covered by
दे आर कवर्ड बाय अ साइनोवियल शीथ, जिसकी जिक्र हम कल करेंगे। ओके, तो अगर सेक्शन काट के देखते हैं तो हम लोग अभी इसकी बात कर रहे हैं, फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ। किसकी बात कर रहे हैं? फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ। So this is a sheath that is surrounding the tendon of FDS and FDP in the fingers, but in the thumb, FPL. Thumb में flexor pollicis longus, and these tendons are surrounded by a synovial sheath. ये फाइब्रस शीथ बाहर है और टेंडन्स के अराउंड जो शीथ है वो क्या है? साइनोवियल शीथ है। डोंट कंफ्यूज बिटवीन द टू, है ना। तो बाहर फाइब्रस, वो डीप पेशा बना रहा है फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ, और ये साइनोवियल शीथ है जो टेंडन्स के अराउंड है। इज इट क्लियर? So this is about the synovial fibrous flexor sheath. Now let's come to the most important topic, the muscles of the hand, and there are 20 of. Okay, so I'll be at least doing 5 today or 10 today, and then we'll move on to the. Let me quickly skip through what I have taught. It's not functioning. Oh, ये तो बंद ही हो गया। Where do I point this? Okay, whatever I have taught you, please very carefully look at it. Okay. Palm of hand, skin, superficial, deep fascia, those are okay. Skin of palm was thick, immobile, creased, supplied by median and ulnar nerve. हमने palm का एक mnemonic भी बनाया था, जरूरी नहीं है। P for papillary ridges, A for abundance of sweat gland, L for lack of sebaceous gland, M for motor representation of cerebral. Hand में सबसे ज्यादा nerve supply होता है motor cerebral cortex में, ठीक है। So anyway, that's not very important. Superficial fascia is fat, fibrous band, palmaris brevis. Deep fascia का 3 modification है, 3 modifications you can see over here. Flexor retinaculum definition: it's a strong fibrous band bridging the concavity of the carpus, converting it into a carpal tunnel. Is it clear? Measurement 2 to 3 centimeter transversely and longitudinally. Around 3 centimeter है transversely, longitudinally. Attachment 4 bony pillars, scaphoid tubercle, pisiform, trapezium ridge, hamate hook. ठीक है, ये डायग्राम एक है, वही सब है बहुत। ये देखो कैसे जा रहा है, टनल है और उसके अंदर से सब जा रहे हैं। You can see the median nerve, the most important structure, FDS, FDP. Median nerve is very important because those who are working constantly with the hand, like a computer operator, okay, तो जब ऐसे हाथ फ्लेक्स रहता है ना, तो median nerve would be compressed in the tunnel. टनल से जब जा रहा है median nerve, कार्पल टनल से, तो बहुत कम जगह है। तो जब भी इन्फ्लेमेशन होगा, स्वेलिंग होगा, तो मीडियन नर्व कंप्रेस होगा और वो सिम्टम ऑफ मीडियन नर्व कंप्रेशन आएगा। दैट इज कॉल्ड कार्पल टनल सिंड्रोम। क्या कहते हैं उसको? कार्पल टनल सिंड्रोम। मीडियन नर्व पर एक स्पेशल क्लास होने वाला है, सर लेंगे या मैं लूंगा, तो उसमें बताया जाएगा कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है। तो जब ये टनल में से जा रहा है मीडियन नर्व और बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, लाइक अ कंप्यूटर ऑपरेटर कॉन्स्टेंटली वर्किंग, तो ये दब रहा है, तो इन्फ्लेम्ड हो रहा है। ओके, so anyway, that's the most important structure over here. 5 structures lying superficial, तुम लोग को आता है, ulnar nerve and vessel, palmaris longus, palmar, ऑर्डर गलत हमने लिखा है यहाँ, बट तुम लोग को सही बताया था। palmar-cutaneous branch of, देखो हम दोनों हैं, me and you,
इसलिए हमने कैप्टन मी एंड यू। मीडियन एंड अल्लर नर्व का हम लोग दोनों क्या पीसी कर रहे हैं, पोलाइट कन्वर्सेशन। और तुम्हारे पापा कैसे हैं, तुम्हारी मम्मी कैसी हैं, ठीक है। मी एंड यू हैविंग अ पीसी, याद रखना है ना। कितने भाई बहन हो, अच्छा अच्छा, क्या हॉबीज है। तो there is a PC, there is a palmar-cutaneous PC going on between polite conversation between me and you. Okay, PC of me and PC of you. You are doing PC, तुम भी PC करो, तब से हम ही कर रहे हैं। और सर आप कब रिटायर कर रहे हैं, आप हम लोग कब तक और टॉर्चर करेंगे। नो दैट्स नॉट पोलाइट, पोलाइट में तो उल्टा उल्टा बोलना। एनीवे, स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द कार्पल टनल, मीडियन नर्व, रेडियल एंड अल्ला बर्सा, वो जो कवरिंग था, है ना। टेंडेंस ऑफ एफडीएस, एफडीपी, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस को भी गिन लिया है, कुछ बुक नहीं गिनता है, ठीक है, तो गिन सकते हो। वो भी नीचे डीप स्लिप है ना, तो अंदर ही हो गया, ठीक है। तो ये टेंडेंस हो गए, तो 10 टेंडन है, 10 हाँ वेरी गुड, 10 टेंडन, 10 टेंडन, ओके। 4 एफडीएस, 4 एफडीपी, 1 एफपीएल और 1 फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। एक नया मुझे मिल गया। 3 modifications. Palmar aponeurosis is the deep fascia covering the central part of the palm. It fixes the skin. ये सब तो ठीक है। Protect underlying structure, वो protect करता है, वो सब बुक में मिल जाएगा तुम्हें। This is Dupuytren's contracture, देखो ऐसा लेके आएगा पेशेंट। कौन सबसे ज्यादा सो रहा है, देखना पड़ेगा। This question, next question is to the sleepy boy in the class. हाँ तुम सबसे ज्यादा स्लीपी लग रहे हो मुझे, हाँ तेरी ये ज्यादा लग रहा है, तुमसे भी ज्यादा। आ जाओ। It's for the whole batch, but he will answer. कल भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे हमारे पीपीटी में, और जो आंसर करेगा उसको टॉफी मिलेगा या चॉकलेट मिलेगा, टॉफी मिलेगा। आज तो लेके नहीं आए। अब बताओ, क्वेश्चन है, इन एन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट द आर्टरी पासिंग लैटरल टू द पिथिफॉर्म बोन वाज कट। So you know now, it's so easy when you know it, है ना। पिथिफॉर्म के बाद मीडियन नर्व है, आर्टरी कौन आता है, अल्नर आर्टरी, ठीक है। सबसे लंबा बाल वाला लड़का कौन है, तुम कर रहे हो। तुम्हारे सबसे बड़े मतलब ज्यादा हैं बड़े, कौन है सबसे लंबे बाल वाले। आओ, बहुत बड़े बाल है तुम्हारे, आओ। हाँ। मेरे इसी तरह क्वेश्चन रहते हैं, द गर्ल विद द डर्टीएस्ट एप्रन या बॉय विद द, तो अपने एप्रन भी धो के आना है या सब कुछ। द मोस्ट टॉकेटिव बॉय इन द क्लास और गर्ल इन द क्लास, तो अचानक से क्वेश्चन आ जाता है। Biceps has 2 heads of origin, triceps has 3 heads of origin, name a muscle with 4, इससे रिलेटेड नहीं है, अलग जनरल नॉलेज क्वेश्चन है। Yes, this was actually a joke. बेचारा बहुत सोच करके बोला कि बाइसेप्स ट्राइसेप्स 4 है तो फोरसेप्स होना चाहिए था। A lot of people with hidden talent. So I hope your hidden talent will come out slowly and slowly. Don't hide it, okay?
लोग कहते हैं ना बहुत हिडन टैलेंट है इसमें, हिडन क्या है यार, है तो सामने लाओ ना फिर। दिस इज फॉर यू ऑल। आप लोगों को दिख रहा है, मैं शुरू करूं आगे? ओके, आई थिंक व्हाट्स द टाइम? हाँ, कोई फायदा नहीं है। वी स्टार्ट विद द मसल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है मसल्स। कल आप लोग मसल्स पढ़ाएंगे तो आइएगा, है ना।